Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mamta Nikam and I am here to help you all with the concepts of mathematics. हमने नया टॉपिक शुरू कर लिया है that is sets and relations and आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं what are the operations on sets. हमने अब तक सेट क्या है, उसके फॉर्म्स क्या है, कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ये देख लिया है. ये भी देख लिया है कि कौन से टाइप्स ऑफ सेट्स है. अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट ऑपरेशंस कैन वी परफॉर्म ऑन सेट. तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ. Complement of a set. What is a complement of a set? The definition set says the set of all elements in U which are not in A is defined as complement of a set A. मतलब क्या, U क्या है हमारे पास? U here defines a universal set, right? ये सुनो, हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स में देख लिया है व्हाट इज यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट है एक सेट विच आर सो ऐसे एलिमेंट्स जो यू में है बट ए में नहीं है. तो सपोज ये कि यूनिवर्सल सेट है और हमें क्या है पता है कि एक सेट है, इसमें से ए, इसे छोड़ के इस ए सेट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है इस यूनिवर्सल सेट में उनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. Okay, so what do we denote it as? We denote it as either a to the power apostrophe or you can say a to the power c, a complement. And how do we express it? Now which form is this? Yeah, we can express it into a set builder form. Set builder form क्या होगा? X such that X belongs to universal set but X does not belongs to A. Then such as elements are known as complement of the set A. Okay, what are the properties now? The properties says A complement का complement अगर लिया जाएगा तो it is nothing but the set A. Obviously if you observe the universal set, यूनिवर्सल सेट में एक सेट ए है और बाकी जो एलिमेंट्स है ये क्या है, ये डिपेंड करते हैं एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट. तो इन एलिमेंट्स का अगर फिर से मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? इट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इनको छोड़ के, तो ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के बचे कौन से एलिमेंट्स है, ए इटसेल्फ, सो इट इज नथिंग बट सेट. ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी सेज एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है. एंड वाइस वर्सा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है एम्प्टी सेट. ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज नाउ वी हैव एन एलिमेंट say universal set as 0 1 2 3 4 5 6. Okay, and we have a set A as say 2 4 and 6. So what will be the complement of a set? A सेट क्या है, 2 4 6. इसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में है एलिमेंट्स, A is such that X belongs to this universal set but X does not belongs to A. This is the definition. So according to the definition, ऐसे एलिमेंट्स A में जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के बाकी के साथ, तो कौन से एलिमेंट्स हो गए, 0 1 3 5. These will be the elements of A complement. Getting it? So ये है first operation. Let's move on to the next operation. Second क्या कहता है, union of sets. So union of sets क्या होगा? What is union of sets? The name itself says union, मतलब क्या, together, right? So when you have say two sets, say A and say B, okay, इन दोनों को एक साथ जो करके values आती है वो together, all the elements which are in A as well as in B are known as union of sets. मतलब क्या, suppose this is set A and this is set B, तो A and B जब together आ जाएगा, A and B, it is becomes A union B. तो ये सारे elements consider किए जाते हैं उसमें, A के भी और B के भी. So ये union B is set. How do we denote? This is a symbol for union, right? A union B is defined as X such that X belongs to A और X belongs to B. मतलब ऐसा एलिमेंट जो इधर A में प्रेजेंट हो सकता है या फिर B में भी प्रेजेंट हो सकता है. Yes or no? So for example, say we have a set where it is given, say A is equals to X
such that x is an even number below 10. Okay, A is a set such that x is a even number below 10, and say B is x such that x is an odd number below 10. ओके सो ए सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ए सेट क्या होगा, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर बिलो 10. सो सारे इवन नंबर्स मतलब 0 2 4 6 8, right? And what will be the b element? B element will be 1 3 5 7 and 9. And what will be A union B now? A in union B will be the elements which are present in both A as well as B. तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now I have written this in order because ये increasing order, because ये दिख रहा है, we can write it, but it is not necessary. You can also express it as 0 2 4 6 8 and then 1 3 5 7 and 9. This way also it also can be written. It is not compulsory that it should be in proper order only. Okay, so that is the second property which says union of sets. Union मतलब क्या, दोनों A and B को मिला के together becomes union. Okay, what is the next operation? Next operation is now intersection. Now what is intersection? Intersection ऐसे elements, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, इट इज जस्ट अपोजिट टू यूनियन. यूनियन में हमने क्या किया था, सारे ए और ए बी के एलिमेंट्स मिला के हमें ए यूनियन बी मिला था, राइट? वेर एज इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स किए जाते हैं जो ए एंड बी में है, सिर्फ ए एंड बी में. ओके, सारे एलिमेंट्स ए एंड बी के कंसिडर नहीं किए जाते. जो ए एंड बी में कॉमन है सिर्फ उन एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं. How do we denote it? We denote it as A. This is a symbol. Ulta U is a symbol for intersection. Okay, A intersection B is X such that X belongs to A and X belongs to B. Now difference देखो, intersection में A and है, हमने union में क्या देखा था, X belongs to A और X belongs to B, या either of the set था. यहाँ पे दोनों सेट में जो कॉमन है वही एलिमेंट्स. तो दोनों सेट में कॉमन जब लिए जाते हैं तो इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है. सी दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस is the term which represents the intersection, so which is the common terms. Okay, so in universal set में जो सिर्फ A and B में जो common है वही क्या होते हैं, intersection के elements होते हैं. Getting it? So suppose now we have say elements, we are given X is a set, A is a set such that X is a prime number less than 10. Okay, and B is a set given say 1 2 3 4. ये B के सेट दिए हैं. ओके, नाउ B इज स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है सेट एंड X हमने डिफाइन क्या करना है. सो यहाँ पे A क्या हो जाएगा, here what will be the A set will be all such prime numbers which are less than 10. so कौन से prime numbers आएंगे यहाँ पे, 2 3 5 and 7. these are the prime numbers which are less than 10. okay, so ये एक सेट हो गया, B एक सेट ऑलरेडी डिफाइंड दिया है. so A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो A और B में कॉमन है. तो कॉमन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है. these are the only two elements which are common, and the rest are not common, so we cannot consider them in this intersection set. I hope everyone is getting this intersection property. Okay, suppose we consider now one more example. Say we are given say A is a set say 1 3 5 7 and 9, and B is a set say 2 4 6 8 and 10. if you observe, A is a set of odd numbers, B is a set of even numbers.
Now, what will be the intersection of these two values, two sets? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है. तो अगर ऑब्जर्व करोगे इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू, बिकॉज दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ odd numbers and this is nothing but set of even numbers. So when such a case appears, that set is nothing but an empty set. It is a empty set, or you can say A and B are disjoint sets. Means A join नहीं होते. When you are graphically interpreted, A set and B set remains different, they does not intersect. I hope this is clear to everyone. Okay, let's move on next. The next operation is difference of sets. Now what will be this difference? Union का मतलब सारे एक साथ, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ वही जो कॉमन है. तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस विल बी such elements which are present in one set but not in the other. Means suppose we have two sets A and B, दो sets है A and B है, तो ऐसे एलिमेंट्स या कंसिडर करेंगे. ए डिफरेंस के हाउ वी डू नोट, इफ वी आर फाइंडिंग ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अगर फाइंड आउट करना है तो ऐसे एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है. मीन्स क्या, टू सेट्स ए एंड बी है और ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है, तो वही होगा, दैट विल बी द एलिमेंट्स ए माइनस बी. whereas suppose we are finding if the b minus a term, अगर b माइनस ए फाइंड आउट करना होगा तो b माइनस ए क्या होगा? सपोज दीज आर द टू सेट्स a एंड b, तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोज आर प्रेजेंट इन b but not in a will be b minus a. Okay, how do we denote it? We denote it as as now we just discussed, a minus b or b minus a, or you can write it as a intersection b complement. why a intersection? because ये एलिमेंट्स तो इंटरसेक्ट हो रहे बट सिर्फ ए के एलिमेंट्स बन रहे, बी के कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखा? बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग बी एलिमेंट्स. सो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो इट ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट is a notation for difference of sets. Okay, and how do we state it? We state it as x such that x belongs to A and x does not belongs to B if we are finding A minus B, and if we are finding B minus A, it's vice versa case, x belongs to B and does not belong to A. Okay, such will be the case which appears. Suppose for example now, or we are given a set, say A is a set which is given as 1 3 5 7 9. Okay, and B is a set given as say if 1 2 4 6 9. say this is a set given. Okay, now ऐसे एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं जो सिर्फ x बिलोंग्स x को x ऐसे एलिमेंट्स कंसिडर कर जो सिर्फ a सेट को बिलोंग करते हैं, b सेट में नहीं. मतलब क्या, b सेट में जो कॉमन है वो भी नहीं कंसिडर करने. इफ यू लुक एट द पिक्टोरियल, जो ये कॉमन सेक्शन है, जो ये कॉमन सेक्शन है वो हमने कंसिडर नहीं किया है. सो जो एलिमेंट्स कॉमन है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. a माइनस बी क्या है? a माइनस बी इज a set of x such that x belongs to A, x does not belongs to B. So ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ A में है B में नहीं है. B में कॉमन कौन से के दिखाई दे रहे हैं? अभी 1 and 9 are common elements in A and B. So ये तो ऑब्वियसली नहीं कंसिडर होंगे. बाकी जो A में बचे एलिमेंट्स है वो होंगे सिर्फ. So that will be 3 5 and 7. I hope getting it. And by see the if it was a opposite case, if it was a b minus a, the definition says x such that x belongs to b, x does not belongs to a, right? So obviously 1 and 9 are common, the terms which are a and b, which we will not consider. Other than those common, what are left in b? Left in b are 2 4 and 6. So this will be the elements in b minus a. I hope these operations which we are discussing are clear to everyone. Let's move on to next one. Now,
What are the let's discuss the properties of difference of sets. अभी हमने देखा difference का definition क्या देखा, a minus b is x such that x belongs to a, x does not belongs to b. And दूसरा definition हमने क्या देखा, b minus a which says x such that x belongs to b, x does not belongs to a. Right, now suppose now we are given two sets a and b. A complement क्या होगा, अभी a complement will be obviously universal minus a set. Right, a complement क्या होता है, द यूनिवर्सल सेट में हमने जो कंसिडर किए हैं ए सेट को, वो छोड़ के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो, तो ऑब्वियसली u माइनस ए विल बी द ए कॉम्प्लीमेंट इन द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंस. a माइनस ए ऑब्वियसली क्या होगा, a माइनस ए क्या है, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलेंगे, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी सेट. a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी वी आर गिवन ए सेट से 1 3 5, ओके, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 3 5 7 and 9. So a complement क्या होगा, 7 and 9 होगा. Right, and what will be a minus a, a minus a complement क्या होगा, the definition से ऐसे elements जो सिर्फ a में है, belong को करते b, a complement b को नहीं. This here a complement is nothing but your b set. Right, depicts a B set. So जो B में नहीं करते but सिर्फ A में है, so obviously क्या होगा 1 3 5 which is nothing but what, your set A. Right, so A minus A complement is going to be set A. Similarly vice versa, अगर A complement minus A निकालना है तो सिर्फ A complement के elements consider होंगे, A के नहीं, तो set क्या होगा 7 and 9 which is nothing but A complement itself. I hope the property is clear. Now next property क्या कहता है, a minus empty set is a itself. Obviously but obvious, a set दिया है say 1 3 5 again, और empty set मतलब क्या, null set, there are no elements. Right, so empty set that is null elements, so obviously a minus empty क्या होगा, null मतलब कोई elements है ही नहीं, सिर्फ एक elements consider हो गए, that is 1 3 5, and therefore it is nothing but equal to set a. Right, a minus b is equal to a intersection b complement, just now we have discussed in the definition. Next one says a minus b is equal to b minus a if and only if a is equal to b. Now yes, this can be the case when we observe where there are two sets which are same. अगर ऐसे सेट्स दिए गए हैं जो दोनों भी इक्वल है, से 1 3 5 एंड बी सेट दिया है 1 3 5, ओके, तो क्या होगा, ऐसे a माइनस बी क्या होगा, दोनों में कॉमन 1 3 5 है, so obviously it is going to be an empty set. Right, because there is no term remaining which is in a which is common in both. Right, other than empty, the empty, we do not write empty here, but empty is a set which is a part of a set. We have discussed in the types of set topic. Similarly b minus a क्या होगा, b minus a is all the elements in b which are not in a, but not in a, but common क्या है 1 3 5, so we cannot consider that, again there is no element, so but obviously this implies that a minus b is equals to b minus a. Okay, seventh property, what does this was with respect to sixth property. Seventh property के respect क्या होगा, a minus b is equal to a if and only if a intersection b is equal to empty. Now what does the intersection mean, a intersection का मतलब क्या होता है, intersection का मतलब होता है ऐसे elements जो सिर्फ दोनों में common है. Suppose a is equals to 1 3 5, b is equals to 6 and 8, so इसका intersection क्या होगा, a intersection क्या होगा, is there any term which is common in both a and b, there is no term which is common, so empty set. Right, it will be empty set. And when we have to find a minus b, then what will be a minus b in such case, a minus b will be a, all the term which belongs to a and not in b. So what are the terms, 1 3 and 5 itself, which is set a itself. So this condition, this property is satisfied when we observe empty intersection of both sets set empty, a minus b is equal to a itself. Okay, next property says a minus b is
not equal, sorry, a minus b is equal to empty if and only if a is a subset of b. Means what? In this case, now we observe a, दो सेट्स दिए हैं, say 1 3 5, and say b is a set which is given as 1 3 5 7 and 9. So what do we observe here? All the elements of A and are present in B. So can we call A is a subset of B? Subset का definition क्या होता है? S जो set दूसरे set में पूरा का पूरा present हो. तो A is a set which is present in B. A is contained in B. A is subset of B. And if you have to find A minus B, what do? We consider all the elements of A only, not B. So also elements so B में है 1 3 5 will also be not considered because it is present in B. So there is no element other left. So what will be it? It will be a null set, that is empty set. Getting it? So if you observe A is a subset of B, we cannot get the value of A minus B is nothing but an empty set. These were few properties of difference of a set. Okay, let's move on to next. Symmetric difference. Now what is symmetric difference? The symmetric difference of two sets is nothing but x belongs to A minus B or x belongs to B minus A. Either of the case, then that difference is known as symmetric difference. How do we denote it? We denote it A, this plus with circle sign, this A, or A triangle B. These are the symbols to differ the symmetric difference. Definition क्या कहता है? ऐसा set जो either it belongs to A minus B, मतलब A minus B difference, or it belongs to B minus A. Any of the difference, then it is known as symmetric difference of a set. Or you can also call it as A minus B union B minus A, because union का definition भी क्या होता है? X belongs to A और X belongs to B, मतलब सारे elements A minus B and B minus A के टुगेदर मिला के जो एलिमेंट्स बनते हैं वो तो है सिमेट्रिक डिफरेंस के एलिमेंट्स. I hope the definition is clear. So what will be the case here? Suppose we have A as a set. Say A is equals to 4 5 6 7 and 8. Okay, and say B is a set, say 3 5 6 8 and 9. Okay, now to find symmetric difference, we need to know first what is A minus B and B minus A, right? So यहाँ पे A minus B क्या होगा? ऐसे elements जो A को belong करते हैं but B को नहीं. Okay, so here if you observe these elements 5 6 and 8, these are the elements which belongs to B, so we cannot consider that. What are the remaining elements? 4 and 7. Similarly, what will be B minus A? ऐसे elements जो A को नहीं belong करते हैं, तो कौन से है वो elements? Here note are the elements 5, 6 and 8 को छोड़ के बाकी elements है 3 and 9. So A minus B is 4, 7, B minus A is 3 and 9. These are the elements, sorry, 3, 3 and 9. Now, what is symmetric difference? Then the symmetric difference says asymmetric difference B is given as x such that x belongs to A minus B or x belongs to B minus A. So it is nothing but what? Union of both the sets A minus B and B minus A. So according to this definition, together the union of all sets, the symmetric difference become 4, 7, 3 and 9. This is the required symmetric difference set. You can also write it in order wise 3, 4, 7, 9. नहीं लिखा तो भी चलता है, nothing difference. All the elements should be just present. Okay, so this is the symmetric difference. Now, what does the property says? The property says asymmetric difference A is going to be empty. But obvious, एक set दिया है, उसका complement क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में A कॉम्प्लीमेंट डिनोट करते हैं. नाउ A सिमेट्रिक डिफरेंस का
डेफिनेशन क्या होता है, a माइनस बी, देर इज नो अदर सेट, सो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट a ही कंसिडर होगा। तो जब हम माइनस करेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा, बट ऑब्वियसली एम्प्टी ही मिलेगा। Second property says a symmetric difference of empty is equals to a. Again, write a intersection union of with respect to empty will give us a set itself. A in symmetric difference u will be a complement. Obviously यूनिवर्स सेट में एक सेट है और उसका अगर सिमेट्रिक डिफरेंस u माइनस a करोगे तो बचेगा क्या, बाकी के एलिमेंट्स जो a में नहीं है, सो ऑब्वियसली a कॉम्प्लीमेंट। A symmetric difference A complement is going to be what, U universal set A and my symmetric difference A complement बचे कैसे कौन से एलिमेंट्स टुगेदर क्या होगा, वो एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो this property also holds. Next, A symmetric difference you can write it as A union B minus A intersection B also. Okay, so one of the sets A union B and A intersection B can also hold. मतलब क्या, यहाँ पे देखो A union B क्या होगा, for the same example suppose we find A union B first. What will be A union B? A union B सारे elements मिला के together 4 5 6 7 8 3 and 9. We just do not repeat it, we write all the common terms, right? And what will be A intersection B, only those those are common. So common कौन से है, 5 7 and 9. And now when we find the difference A union B minus A intersection B, इनमें से difference क्या होगा, what will be the difference of these sets, the difference will be the elements, क्या है, the elements 4 सॉरी यहाँ पे A intersection B क्या आएगा, the common elements that is, sorry, this is going to be 5 6 and 8, I'm sorry, so 5 6 8 छोड़ के बाकी के elements कौन से है, 4 7 3 and 9. So is it matching with this? Yes, so this property also holds. So these were the few operations which we discussed in today's video. Thank you for watching the video. I hope all the operations on the set are clear to everyone. And let us meet in next video with such a new topic on sets. We have already discussed in previous videos what is a set and types of sets. Please go through those videos also. Please do like, share and subscribe my YouTube channel for more such concepts and videos. Thank you for watching.